Okay, students. हाँ जी. Hope your test was fine. Test हो गया था आपका? Any problem? Any doubt in the test? चलिए. Okay. Let us continue with our revision. Right? We were doing grassland. Grassland we did. Lion हमने start किया था. In grassland there are two types of organisms. Predator और prey. या तो predator होगा या prey होगा. Now the question is, what is predator? Predator is an organism which depend on other organisms for the food. जो दूसरे organisms पे depend करता है for the food. Right? Like lion, tiger. इसी तरह दूसरा organism है prey. What is prey? It is the organism which is the food for other organisms. Right? जैसे कि deer. So to survive in grasslands, both have different types of adaptations. Right? पहले हम करेंगे lion की या tiger की. Lion की क्या adaptations है? Number 1. In case of lion, what happen is it is light brown in color. Right? Light brown in color. This help it to hide in the dry bushes. Right? Prey cannot spot it. It is hiding. Number 2, eyes are placed in the front. सामने है आंखें. Why eyes are placed in the front? So that proper focusing of the prey is there. It can see, it can judge the accurate distance. कहाँ पे है prey? Okay, obviously it can run very fast. Then comes the prey. Prey आ गया deer. Deer की अब क्या characteristic है? It has long ears. लंबे लंबे कान है. To design even the slightest sound. छोटी सी भी sound होती है, deer comes to know. Right? Number 2 characteristic है eyes. Eyes are located on the sides. यहाँ पे sides पे हैं eyes. Why? So that it can see in all the direction where the predator is hiding. Okay, then obviously it has very strong legs to run fast. Only if it can run fast, it is able to save himself. Otherwise, predator will catch it. Right? Is that clear to all? इसके बाद next आते हैं aquatic organism. बच्चे, aquatic means organisms that survive in water. इसमें आते हैं both plants as well as animals. Animals और plants दोनों आते हैं. So first of all we will be discussing about animals. Animals में बेटे best example आती है fish की. Fish is mostly found aquatic animal. So what are the characteristics of fish? Number 1, streamlined body. Streamlined body कैसी होती है? Like this. Narrow at both the ends and broader in the middle. Right? Narrow at both the ends and broader in the middle. This is streamlined. Is that clear? So ये shape क्या करती है? It helps to move in water. Right? Then आ गया, after streamlined body, it has scales, slippery scales या wet scales. These scales, they protect the body from getting damaged in water. ये scales पानी में damage होने से बचाते हैं. Right? Then fins and tail, they help to change the direction. They maintain the balance in water. Right? Then how do they take up the oxygen? They have gills to take the oxygen absorbed in water. Is that clear? Then इसके अलावा there are some other organisms like dolphin and whale. They also live in water.
but they belong to the class mammals. They do not have gills to absorb oxygen. Gorish slippery scales, they prevent the body from getting damaged in water. Right? Now coming to dolphin and whale, they are mammals. They do not have gills. They have lungs. Right? So how do they breathe? How do they take ऑक्सीजन? पानी में रहते हैं पर गिल्स नहीं है, लंग्स हैं, तो सांस कैसे जाएगी? ऑक्सीजन कैसे अब्सॉर्ब करेंगे? दे हैव ब्लो होल, excuse me, they have blowholes on their heads. They take in oxygen through that blowhole in the air, go inside the water, right? Then live there for so many hours, then again come out of the water, again take in oxygen. Right? Is that clear? इसके अलावा वहां पे और कौन रहते हैं? Ducks and frog. Ducks and frog. As you know, ducks have webbed feet. Ducks have webbed feet to move in water. Frog also have padded feet, webbed feet. Right? Frog is an amphibian. It can live in water as well as on land. When it is in water, it breathes through moist skin. When it is on land, it breathes through lungs. Is that clear? Then बेटे इसके अलावा there are octopus and squid. Octopus and squid. They also live in water. They do not have streamlined body. Then how do they live there? Octopus and squid, they are found near the seabeds. बिल्कुल नीचे होते हैं वो, right? So what happen is, whatever prey come to them, they catch it. But if they have to move, they make their body streamlined. Is that clear to all? Is that clear? Then after this animals, next come plants. Plants, if you remember, you have done in 4th, 5th standard, there are 3 types of aquatic plants. Floating, fixed, करे हुए हैं ना ये, underwater या submerged plants. Remember water lily, hyacinth, hydrilla, lotus. You remember all these plants? तो ये कैसे होते हैं? हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, अब हम इनको कंबाइन करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे. बच्चे, am I clear to all? समझ में आ रहा है what I am saying? Is it clear to all? Okay, got it, Arshia. Thank you. Now coming to plants. Okay, got it, got your message. बच्चे क्या होता है? The plants, their roots are small because इन्होंने water they don't have to absorb. इनका काम क्या है? Roots का पानी तो absorb नहीं करना, रहते ही पानी में है, तो their work is to fix the plant. Right? They do not absorb water. Number 2, stomata are either absent or if present, they are present on the upper side of the leaf. नीचे तो पानी है, तो ये लीफ के ऊपर होते हैं. Right? Then stems are hollow. Stem खाली है to make the plant float on water. Right? Then leaves, they are ribbon like. इस तरह के पतले पतले leaves होते हैं, ribbon like. Why ribbon like? So that when water current passes, they can move with the water current and do not get broken. They do not get damaged. Right? Is this clear to all? Is this clear?
इस चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ. हरी अप. एनी डाउट इन दिस चैप्टर? हरी अप, गिविंग यू 2-3 minutes. Go through this. क्यों इन्होंने एयर की क्या करनी इन्होंने जरूरत? तो जो हवा उसमें ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होती है ना, वो ही ले पाते हैं ये. ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गौरीश. देयर इज वैक्सी कोटिंग ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ so that they do not get damaged by the water. Right? Any other doubt? Hurry up. खुशी, tortoise live for so many years. काफी साल जिंदा रहता है tortoise. Right? About 150-120 years. एक tortoise का एवरेज लाइफ स्पैन 150 years तक भी हो सकता है. Right? लॉन्ग लिव्ड होते हैं tortoise. Any other doubt? Yeah, they can live, but average 150 है. Okay? Most of them they live up to 150 years. Any other doubt? Hurry up, hurry up. उसके बाद हम next chapter start करने वाले हैं. अगर कोई डाउट है अभी पूछ लो. If not, let us move to the next chapter. Only few days are left in your exams. Start revising the things. Okay? करें स्टार्ट. अगर कोई डाउट नहीं है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ लेसन 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. बच्चे, पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की जरूरत ही क्या है. Why do we need to separate the substances? As we know, substances are found in mixture form. Sometimes they are found in mixture form. 2 or more components are mixed with each other. Sometimes we need to separate them. क्यों? Number 1, to get the useful substances. Number 2, to remove the harmful substances. Then उसके बाद to get pure substances. Right? These are the uses. Now बच्चे, how can you separate them? There are so many methods of separation, but we have to see which method could be applied, which will be the best suited. उसके लिए we can categorize the components. हम components को categorize कर सकते हैं. Like क्या हो सकता है? There may be solid in solid. Solid में solid पड़ा हुआ है component. There may be solid in liquid. Then there may be liquid in liquid, right? Okay, is that clear? अब हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए. सॉलिड में सॉलिड पड़ा हुआ है, सॉलिड लिक्विड में पड़ा हुआ है, लिक्विड में लिक्विड पड़ा है. अब इनको सेपरेट कैसे करना है? अगर सॉलिड सॉलिड है तो 4 मेथड अप्लाई हो सकते हैं. नंबर 1, हैंड पिकिंग.
Number 2, threshing, then winnowing, then sieving. राइट अब हमने देखना है कौन सा मेथड बेस्ट सूटेड है. ओके, वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. पहले इस टेबल को कंप्लीट कर ले. अगर सॉलिड एंड लिक्विड है, नोट डाउन करो ये टेबल साथ साथ. जब सेपरेशन आती है देन यू पीपल डोंट नो व्हाट विच मेथड टू यूज. अगर लिक्विड में सॉलिड है, right, one component is solid and one is liquid, two situations may arise. Either solid may get dissolved in liquid or it may not get dissolved in liquid. अगर वो dissolve हो गया तो we say soluble. अगर वो नहीं dissolve होता तो we say it is insoluble. राइट सॉल्यूबल, अगर सॉल्यूबल है तो क्या क्या प्रोसेस है सेपरेशन का? इवेपोरेशन. राइट और अगर इनसॉल्यूबल है तो सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, filtration, and fourth is churning और सेंट्रीफ्यूजेशन. दो नाम है इसके. राइट नो खुशी, लोडिंग इज नॉट द सेपरेट मेथड. वो सेडिमेंटेशन में हम ऑलरेडी ऐड कर देते हैं. लोडिंग कोई अलग मेथड नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंटेशन होती है. Clear? Then liquid in liquid. Again, two cases may arise. Either both the liquids may get dissolved. If both the liquids get dissolved, then it is miscible. In case of liquids, we do not use the word soluble. Video ही बंद हो गया. We use the word miscible. And in case where the liquids are not soluble with each other, we use the word immiscible. Immiscible. Right? If it is miscible, if the liquid is miscible, the process used is distillation. And if it is immiscible, the process used is decantation. Right? Decantation is used. Beta, separating funnel is a device, खुशी. The name of the method is decantation. यही आप गलती करते हो एग्जाम में. Name of the method is decantation, and decantation of liquids is done by using a device called separating funnel. Right? Hopefully it is clear to you all. फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो if you want to. अगर इसमें कोई डाउट है ask me. बच्चे नेटवर्क एरर में भी देयर खुशी. Hopefully it is clear now. हाँ जी.
Savya, network problems may be there, beta. Any doubt to anyone, you can ask from this. Otherwise, I am going to start methods explanation. Note down कर लो इसको फटाफट. Yes, सक्षम समाज. मैम जो बोर्ड में मैम कुछ लिखा हुआ ना वो कुछ मैम क्लियर नहीं हो रहा, आपकी वीडियो बहुत हैंग हो रही है. बेटा वो नेटवर्क इश्यूज होंगे, कोई बात नहीं, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा. ओके Yes, any doubt in this? हाँ जी अर्पिता. अर्पिता, no problem बेटा. There may be some network issues. Hurry up, 2 minutes are left. Note this down immediately. आपका हो गया note? Rajaran, are you writing? Do it, no problem. Yes, Riddhima, I know. As I told you, there may be some network errors. We'll be having the recording. Okay? Hurry up, everybody, note it down. If there is any doubt in this table, you can ask me right now. After that, we'll be starting with the explanation of this. Okay? Hurry up. बच्चे जब भी आपको सेपरेशन आएगी एग्जाम्स में कि हाउ विल यू सेपरेट दिस एंड दिस, तो सबसे पहले आपको देखना है इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है या लिक्विड लिक्विड है. उसके बाद उसके मेथड्स लिख लेने हैं, फिर देखना है बेस्ट सूटेड कौन सा है. देन यू हैव टू चूज एंड माइंड वन थिंग, पूरा एक्सप्लेन करना होता है आप उसको कैसे सेपरेट आउट करोगे. ओके अगर आप सेपरेट आउट नहीं करके दिखाते हो, सिर्फ मेथड का नाम लिख देते हो या एक डेफिनेशन लिख देते हो छोटी सी, तो आपके नंबर कटते हैं. राइट? सो बी पर्टिकुलर विद दिस. हाँ जी, एनी डाउट? Shall we start now? Hope everybody has written. First is hand picking. बच्चे हैंड पिकिंग क्या होती है? As clear from the name, हाथ से उठा के पिक करना. In this case, both the components are solid. But ये मेथड यूज कब करना है? नंबर 1, जब दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग साइज के हो, एक कंपोनेंट जो हमें सेपरेट आउट करना है वो छोटा हो. नंबर 3, कलर अलग अलग हो, इजीली विजिबल हो. राइट? उसके बाद हम
ये मेथड यूज करेंगे। जैसे दाल में से कंकर निकालना, दोनों अलग अलग कलर के हैं, कंकर कम अमाउंट में है, इजीली विजिबल है, ओनली देन वी कैन यूज हैंड पिकिंग मेथड। Okay, rest we will be doing tomorrow as it is break now. Thank you, students.